हेलो एंड वेलकम टू बुलंद सोच। आज का टॉपिक है हैप्पीनेस वर्सेस कंटेंटमेंट। सो कीप वॉचिंग। डू यू वांट टू सीक हैप्पीनेस और डू यू वांट टू सीक कंटेंटमेंट? आप खुद को ये आंसर जरूर करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो व्हाट इज हैप्पीनेस एंड व्हाट इज कंटेंटमेंट? लेट्स जस्ट बिगिन फ्रॉम हियर. Happiness is event based. It is stimulus based. What do you mean by stimulus based? अगर कुछ बाहर अच्छा होता है, अगर हमारे डिजायर्स फुलफिल होते हैं तो वी फील हैप्पी. तो हमारे डिजायर्स तो कभी खत्म होते नहीं है. तो आर वी ऑन टू अ काइंड ऑफ अ ट्रेडमिल दैट इज नेवर एंडिंग? So we have to think about it. Now when it comes to contentment, it is state based. What do you mean by state based? It is a kind of a emotional homeostasis. Now, what do you mean by that? I am enough. This moment is enough. It actually means that. Contentment is nothing but you have a feeling of abundance. If you want to feel abundant, if you want to have a growth mindset, you need to practice contentment. Now, contentment practice करते कैसे हैं और इससे क्या होता है? Let's just get into that. Alright. First thing is self-acceptance. You start accepting yourself the way you are without judging yourself. Number one. Number two, you start accepting what you have. You start focusing on what you have rather than what you don't have. If you are aware of your resources and you are aware of the potential they have, that means आप कुछ लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे. एंड इफ यूर लाइक कंप्लेनिंग एटीट्यूड अगर आप में है तो यू आर ऑलरेडी फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट यू डोंट हैव. हाउ कैन यू ग्रो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट साउंडिंग लॉजिकल टू यू? That's what contentment is, knowing your resources really well and acting by knowing their potential. All right. तो that is a kind of a growth mindset. It might resolve your questions. अगर हम contented feel करेंगे तो हम grow कैसे करेंगे? वो इच्छा कहाँ से आएगी? Are you understanding my point? Now, when you are contented, you are detached from, the results. You actually focus on work because in order to succeed, you need to focus on work, right? Results are not in your hands, but your karma is. तो यही हमें योग फिलॉसफी सिखाती है. ऑल राइट. लास्ट, यहाँ पे हम आते हैं कि cognitive reappraisal. Now, what do you mean by cognitive reappraisal? Cognitive reappraisal means what does a fully functional person look like? You are able to, actually stay resilient towards any experiences that you have in life. May it be good, may it be bad. I'm not saying कि दोनों एक एक्सट्रीम पे जाके होना चाहिए. I'm not saying कि सब कुछ अच्छा ही हो ना सब कुछ बुरा हो. But are you able to digest the experiences? Contentment will give you that power within. हमने क्या क्या सीखा contentment से? एक हमने सीखा emotional homeostasis, that is I am enough. This moment is enough. Self-acceptance without judging yourself. All right. That means you are already aware of the flaws. You already have a Sakshi Bhav within towards your actions and your thoughts. Number 3, cognitive reappraisal. Ability to interpret situations in a way that will empower you, actually empower you. All right. And the last thing I forgot to mention, low discrepancy towards your real self, current self, and your ideal self. You are not, your expectations are not overpowering you. That is contentment. They are not making you feel low. You are happy with what you have. And contentment is a hidden form of a feeling that makes you feel abundant in terms of whatever you have in life. This is the real feeling of gratitude that people try to teach us. Are you able to understand the logic that I'm giving behind it? All right, I hope you are. Now there's one sutra that says santosh anuttamaha sukha labhaha. Contentment is the
supreme happiness. Contentment is the supreme happiness. Are you getting my point? So there are many things, all right? You start accepting yourself without judging yourself. That is ahimsa, all right? Ahimsa. तो कंटेंटमेंट के ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे. एंड आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इट? यू can't be controlled by any of your desire. You won't be controlled by any of your expectations that you have. You're not getting controlled by the results. You are actually doing it for the sake of work that you want to do. You're not doing it because कि आपको success मिले ना. I'm not saying कि आपको नहीं मिलनी चाहिए because you're not expecting it. No, that's wrong. That's a totally wrong mindset. But I'm saying just focus on your work and you'll succeed. Focus on your work. There might be chances you might not. There might be chances you might. Alright. अगर नहीं है तो आपका ध्यान सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगा, आपके फ्लॉज की तरफ जाएगा. You will be able to work on them. It is a good feedback mechanism as well. Are you understanding my point? Next, Santosha dissolves the kind of a duality that we have, the kind of morality that we have learned in school, the duality of good versus bad. This is good, you should do this. This is bad, you shouldn't do this. तो ये जो duality है ना, इसको we tend to move towards higher dimensions, I would say, when it comes to maturity. All right. Santosha is also not about getting more, but it makes you feel complete within. You are not incomplete, you are complete. So Santosha kind of, actually gives you that kind of a feeling. All right. Santosha actually means surrendering your things that are not in your realm of control. There are many things that are not in our control. How can we, should we get stressed about it? Contentment makes you or gives you a kind of a freedom about things that are not in your control. You try to surrender. That, turns out to be Ishwar Pranidhan. So this is what contentment and Santosha is all about. Now, how to practice this in terms of our action? अहिंसा यानी जो हमारा ऑटो पायलट मोड रहता है ना, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म वाला माइंड रहता है ना, यू आर नॉट गुड एट दिस, यू शुड डू दिस, यू आर नॉट गुड एट दिस, दैट, तो उस ऑटो पायलट मोड को ये शांत कर देगा. आप समझ रहे हैं? You will get detached from your results, focusing only on your work. Selfless service. हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है. ऐसी कुछ चीजें करना gives you a feeling that you have actually abundant. You are abundant in what you are giving to the other person. You have a feeling of abundance while giving things to others, right? तो हम लाइफ में कभी ऐसा सीखा नहीं कि शेयर भी करनी चाहिए, देनी भी चीज़ें चाहिए. ये नहीं आता, बहुत लोगों को नहीं आता. एंड लीडर्स आर गिवर्स बिकॉज दे हैव अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट विद इन. दे हैव अ फीलिंग ऑफ अबंडेंस विद इन. सो आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ दे दो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं. बट प्रैक्टिस गिविंग इट टू समवन who is actually in need. You know what Karna was, advised by his dad and why he became Danveer. He had a kind of a feeling कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने गिल्ट को कैसे खत्म करूं. तो his dad advised him कि start donating things. And then he started donating things every morning. And he was known as दानवीर कर्ना because उन्होंने अपना कुंडल और कवच तक दे दिया था कुरुक्षेत्र के वॉर से पहले. उनसे वो मांगा गया था because it was his power and he gave that as well. I'm not saying कि हमें वैसा कुछ करना है, लेकिन
कभी हमारा मूड खराब हो और किसी को कुछ हम दे के आए ना, यू वुड फील इमेंसली ग्रेट फ्रॉम विद इन। आप किसी को कुछ दे के देखिए, आपका दिन बन जाएगा। ऑलराइट, तो ट्राई डूइंग अ सेल्फलेस एक्ट समटाइम्स, नॉट एवरी नाउ एंड देन बट समटाइम्स करके देखिएगा। दिस इज द टास्क फॉर फीलिंग कंटेंटेड विद इन। ऑलराइट, नाउ इन टर्म्स ऑफ योग, हम ये प्राणायाम के थ्रू अटेन कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट वाले, सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले टॉक्स हम कैसे अवॉइड करें? थ्रू जप मंत्रा रेसिटेशन, या जप करके ना हमारा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या ऑटो पायलट मोड है ना, वो शांत हो जाता है। वी टेंड टू फील स्टेबल, वी फील काम। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बहुत हेल्प करेंगी। हमने क्या क्या सीखा? व्हाट इज हैप्पीनेस? इवेंट बेस्ड है। व्हाट इज कंटेंटमेंट? स्टेट बेस्ड है। नाउ कंटेंटमेंट से क्या क्या हो सकता है? हम कैसे फीलिंग्स इवोक कर सकते हैं अपने अंदर? सेल्फ एक्सेप्टेंस वाले, हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होगा, लो डिस्क्रिपेंसी। वी वुड बी एबल टू डाइजेस्ट द एक्सपीरियंसेस, मे बी गुड और बैड इन आवर लाइफ. We would be able to surrender the things that are not in our realm of control. Emotional homeostasis, I am enough, this moment is enough. Last, how to practice them? Through detachment. We only have control over our karma and not over the results. तो हमें अपने काम पे फोकस करना है. नंबर 2, अहिंसा. अहिंसा टुवर्ड्स दी सेल्फ. सेल्फ क्रिटिसिज्म के टॉक्स खत्म हो जाएंगे, और अगर ख़त्म करने हैं तो अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म. वो कैसे होगा हम देखेंगे किसी दिन दूसरे वीडियो में. सेल्फलेस सर्विस करके देखिए, किसी को कुछ दे के देखिए, आपको कैसा लगता है. नेक्स्ट, in terms of yoga, japa mantra recitation and pranayama can help you in practicing contentment. And the last statement, contentment is the supreme happiness. Contentment is the supreme happiness. Are you getting my point? तो आज हमें समझ तो ज़रूर आया कि कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस क्या है. तो क्या हमें हैप्पीनेस के पीछे ट्रेडमिल की तरह अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, या हमें कंटेंटमेंट सीख करना है? चॉइस इज योर्स. आई लीव इट अप टू यू. टिल देन, signing off, बुलंद सोच.